हेलो फ्रेंड्स, मैं रुकैया नाज। इंटरव्यू पॉडकास्ट के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारी खास मेहमान है टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ की डीन डॉक्टर सीमा वली। डॉक्टर सीमा वली जी लास्ट 17 ईयर्स से एकेडमिक फील्ड में एक्टिव हैं और मैनेजमेंट फील्ड में इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। शी इज़ मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, ऑल्सो PhD होल्डर एंड नेट क्वालिफाइड। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं और मैनेजमेंट फील्ड के कोर्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। तो मैम, जैसा कि आप काफ़ी टाइम से मैनेजमेंट फील्ड में हैं, मैनेजमेंट कोर्स में हैं, तो मैम इसके बारे में थोड़ा इस कोर्स के बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पॉडकास्ट। और शुरुआत मैंने मैनेजमेंट पढ़ाने से ही करी थी, तो मैनेजमेंट के पढ़ाई और पढ़ाने में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। बेसिकली मैनेजमेंट को, MBA को देखा है हमने कि किस तरह से वो शुरुआत करी गई है, क्योंकि MBA का क्रेज़ बहुत ज़्यादा रहा है मैनेजमेंट का, स्टडीज़ का। धीरे धीरे देखा हमने कि बहुत सारे और कोर्सेज भी आने लगे। BBA तो इंट्रोड्यूस हुआ ही, BMS इंट्रोड्यूस हुआ और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं प्लस मास्टर्स कोर्सेज हैं, जिनमें कि बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं। जैसे जैसे इवॉल्वमेंट आए हैं, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होती गई हैं। पुरानी स्पेशलाइजेशन जैसे हमारे पास मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR, बट नाउ यू कैन सी दैट देयर आर वेरियस स्पेशलाइजेशन। यू कैन गो फॉर MBA retailing, you can go for MBA fashion designing, you can go for MBA apparels and so on and so forth. So there is a vast choice of specializations if a student can choose from that area. You mean आज के टाइम पे मैनेजमेंट हर फील्ड में ज़रूरी है? Exactly. तो हर फील्ड में The life is management. You have Yes, to manage yourself. Everything. Yes. Okay. So मैम, फिर भी कुछ स्कोप के बारे में आप बताइए, इनकी फील्ड्स क्या क्या स्कोप्स हैं इनमें? मैनेजमेंट बेसिकली जब हम बात करते हैं तो वी स्टार्ट विद द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जो कि मैंने बताया BBA से स्टार्ट करें, BMS से स्टार्ट करें। देयर आर सेवरल यूनिवर्सिटीज व्हिच हैड स्टार्टअप द कोर्सेज व्हिच आर इनटू द ग्रेजुएशन लेवल मैनेजमेंट। लेकिन आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में आ जाते हैं। इफ यू टॉकिंग अबाउट द कैरियर स्कोप, सो कैरियर स्कोप में एक स्टूडेंट जो चूज करता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से लेके, तो उसके सामने एक कैरियर का एक बहुत 5 साल का एक स्कोप है कि वो क्या करना चाहता है। दे कैन गो इन वेरियस फील्ड, द लाइफ, द कैरियर इज एंटायर देयर, कि कहाँ जा सकता है वो। देयर आर प्राइवेटाइजेशन देखा है, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स हैं, दे आर वर्किंग, दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ जॉब्स in that area. There are so much private jobs which are there, not only the corporate sectors, there are banking sectors, there are retailing sectors. We have seen emergence of so many malls coming in Lucknow, and there are various, so many businesses are coming. So you take a name of any company and you can find the jobs there in various specialization areas. Yes. So मैम, अगर हम आगे की बात करें तो जैसे स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, corporate and also academics. Right. So according to you, which one is better? The choice of the students should go on and they should think about कि where they have to go. इनिशियल स्टेजेस में उन्हें सोचना पड़ेगा कि हम BBA कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम MBA कर रहे हैं तो क्या करेंगे। दे हैव टू बी वेरी क्लियर। सो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हम कॉर्पोरेट में, जैसे मैंने कहा, जा सकते हैं। जैसे आपने स्टार्टअप की बात करी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी, तो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। स्टार्टअप में यू कैन हैव एनी आइडिया while you're doing as entrepreneur. You're a small business, you have your own business and you can start with the small ideas. तो हमारे कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एंड वी आर लुकिंग इनटू द स्मॉल आइडियाज़। तो उस इंक्यूबेशन सेल में वो बच्चों के आइडियाज़ लेकर आते हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, कि ऐसे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, तो वी कैन स्टार्ट अप विद दैट आइडियाज़। तो स्टार्टअप इज़ वेरी जिंग, वेरी इन, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर having their own startups and they're working on that. So it's very interesting field of startups are there. ये आपने बहुत अच्छा कहा कि मतलब आजकल की क्या बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये दोनों ही जो टर्म है ये आजकल बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है। है ना, कि अब मुझे तो एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा है, एंटरप्रेन्योर बनना है। Yes, right. तो it's very अभी हम देख रहे थे कि जिस तरह से
गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इसको लेके चल रही है कि अभी हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर विकास कौशल योजनाएं आई हैं, स्किल डेवलपमेंट्स में ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं और उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं वेयर a student can go, they can get training programs, they can start their own. Small fundings are given. There are lots of loans which are provided by the government to startups. So you can imagine you can create yourself, but you have to think a lot. It should be very, very critical thinking. A student should start thinking, क्या करना है, कैसे करना है, and then only the things will be there. Means opportunity is there. Right. It is up to you how to deal. How to grab the opportunity. Yeah, how to grab the opportunity. Yes, exactly. I'm getting. So, ma'am, next, जैसे as you know, NEP. NEP जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, मैम ये कैसे कितनी बेनिफिशियल है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एंड फॉर मैनेजमेंट, क्या डिफरेंस आपको लगता है पहले से और अब में, ये कितना बेनिफिशियल रहेगी? जब हम नाम लेते हैं NEP 2020 के तो स्टूडेंट थोड़ा घबराए आते हैं कि उन्हें लगता है कि अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, और हम लोग को भी लगता था कि NEP 2020 इंट्रोड्यूस हुआ है तो व्हाट विल बी द चेंजेस, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज आवर सेल्फ, हाउ द सिलेबस विल बी चेंज एंड हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे उसमें. बट लास्ट हम देख रहे हैं BBA में हमारे 3 years होने वाले हैं यहाँ पे, एंड NEP इज बीन very done very properly. That is, NEP में बेसिकली यही है कि कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं सिलेबस में, कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग में, कुछ वोकेशनल स्टडीज़ लेकर आ रहे हैं. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे हम वोकेशनल कोर्सेज में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, स्किल्स को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स विल नॉट ओनली make a student study the subjects but also help in critical thinking. That's very important. Cognitive thinking, critical thinking is very important, and they are giving that. Means government do work on education. Yes, they are implementing this whole education policies, and there are lots of changes which are going on. 4 years courses been introduced. And how it should be. There are lots of things which are there, and it will take a long time to discuss about NEP, I think. Yeah. So next question is related to higher studies. Okay. अगर कोई student MBA के बाद या masters के बाद की भी academic field में जाने के लिए अगर वो पढ़ाई में आगे जाना चाहता है तो क्या क्या options है मैम, कैसी तैयारी उसको करनी होगी? If students have done the master's course, for example, if they have done MBA, because we are focusing on management, so there are lots of avenues to go into the academics. Yeah. Firstly, they can go and crack their NET. Yeah. They can go further by getting a good percentage. Explain what is NET. National eligibility test is there. That is done by UGC, and where the student has to fill up the form. It's like cracking the job, actually. It's like eligibility criteria of a lectureship in any university or college, and now university and colleges have to take a eligible candidate who has this NET qualifications. So you crack you go and take the examination, you crack it, and if you are on the higher merit, you qualify for JRF, that is Junior Research Fellowships. Yeah. So where you can get the stipends for your research. There is very interesting part that if you qualify JRF, you can go and join the university of your choice, and you can do your PhD in that particular subject, as well as you'll get the stipend from the government till I think 5 years, what I think so. So that is a very, very interesting one, and the students who like to go into academics, they can go for this, should go rather for this process of getting themselves cracking NET and JRF, and also they can go for simply for PhD if they don't go for JRF on it, or they can't beat it. So there are universities which also have this entrance examination for PhD. They can give the exams and they qualify, and then they get the guides from the university, and then they can go for the PhD process. PhD is also a good option. Yes, very good option where you can, if you are interested in teaching, you're interested in into academics, coming back to academics, it's very interesting part. But you have to go to this entire process. Yes, of course. So, ma'am, टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है ना, पढ़ने का तरीका चेंज हो रहा है, स्टडी मटेरियल्स चेंज हो रहे हैं, इवन स्टडी लर्निंग
लर्निंग भी चेंज हो रही है ना. वी आर आजकल के स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादातर क्या है कि पढ़ना चाह रहे, ठीक है, मोबाइल से वीडियो देख लिया ऑनलाइन. राइट. सो क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैम इससे, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने एक लंबा वक्त गुजारा है एकेडमिक में, आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं? आपकी बात सही है कि स्टूडेंट्स का जो कहते हैं हम रवैया या दे आर चेंजिंग, द वेज आर चेंजिंग एंड दैट इज नॉट टू बी ब्लेम टू द जनरेशन. जिस तरह से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, स्टूडेंट्स भी उस टेक्नोलॉजीज को लेके चल रहा है. बट द कोर थिंग इज दैट कि हमारी जो हैबिट है लर्निंग की, रीडिंग की और समझने की, जहाँ तक वो इम्बाइब कर सकता है, तो द टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड. टेक्नोलॉजी शुड बी टेकन इन अ राइट वे. आप कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड, बट आप अपने कॉग्निटिव, जिसको स्किल्स बोलते हैं, यानी कि मेंटल स्किल्स बोलते हैं, उसको इन्हांस करते रहिए. आप टीचर से ज्ञान लीजिए, आप गूगल से ज्ञान लीजिए. टीचर से ज्ञान लेंगे आपको बेहतर मिलेगा, गूगल से तो ठीक ही मिलेगा. ओके, आप मतलब कह रही कि मशीन से ज्यादा हमारे एग्जैक्टली एक टीचर्स ऑलवेज टीचर्स गुरु सबसे ऊपर हैं. सबसे ऊपर आप मशीन को लेकर आइए. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है कितना ज्यादा, आप देखते हैं चैट बॉक्स आ रहे हैं, चैट जीपीटीज आ रहे हैं, बट कैन यू फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ टीचर, द माइंडसेट ऑफ अ टीचर, the experience of a teacher, I think these are the ones which a teacher should be much more focused and should take a pride कि we can beat the machineries. Exactly, ma'am. But don't you think after AI it's become very challenging for teachers? Yes, it's becoming challenging. So normal teacher, average teacher should pull up the socks and उन्हें देखना चाहिए कि हम आसानी से इस तरह से नहीं हो सकता है और मशीन के साथ हमारा कंपटीशन चल रहा है. एंड द गुड टीचर विल सर्वाइव, they will survive, I think, because knowledge is very important, and you get ready-made knowledge. If you go for the chat, say for example, you go to chat GPT, there are 100 students who are taking one topic and giving it to chat GPT. They get a similar answers. So similar answers are not required. Many universities have banned chat GPT also. So the thing is that if you misuse it, then the technology can also misuse you. So you will become a servant of machine. So you should become the servant of your mindset. So it's important to be with the teachers. It's important to be with the faculties. Take help of every challenges which are coming. Take help of technology. It's not bad, but don't misuse it. And this is very important for our students and youth. So this is all about today's episode. Thank you so much for joining us. Thank you, Rukaiya, very much for taking time out also and calling me for this podcast. Thank you very much. Thank you. So friends, ये था हमारा आज का इंटरव्यू पॉडकास्ट. आई होप ये आपको पसंद आया होगा. इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्यूरीज होगी तो आप हमें अपने कमेंट लिख कर दीजिएगा. और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं. आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन, बाय बाय.